I think we are live. Okay. Let's just. I have invited my sister in the group, so add her. Oh, yeah, got it. So she's there, she's been added. And to everyone who's watching, can you please let us know if you can see us, if the voice is fine? All right, so. Right, we'll just wait a few more moments before we begin. But I see 2 viewers now. Awesome. Okay. Hello, people. Can you please let us know if you can hear us clearly, see us clearly, so we can begin? I think I'm one of the viewers, but I can see the live. No, because it was showing me 0 viewers before. It's showing me 2 viewers now. So I hope it's not both of you over there. We'll just wait a few more moments. I think there is an. I see 2 viewers. There is an invite option. There is an viewers now. So I hope invite option. Both of you. Okay, I hear myself. Why am I hearing myself? There is an invite option as well. I think there is an invite option. There is an invite option. Both of you. Okay, I hear myself. Why am I hearing myself? There is an invite option as well. I think there is an invite option. Okay, you have an invite option, but I don't see an invite option over here. Okay, I hear myself. Why am I hearing myself? Our voice is repeating thrice. Our voice is repeating 3 times or 4 times. I have an invite option, but I don't see an invite. I don't know why that is though. Just a second, guys. I'm really sorry for this. Just a few more minutes. Our voice is repeating 3 times or 4 times. Yes, okay. Did anybody see any comments? Yes. Okay. Hi, Sarah. Somebody saying hi. Check echo setting. Okay. Okay. I still hear myself. Priya, are you wearing headphones? Yes, I am. Oh, that is weird. I don't know. Because it's like I was hearing myself, but then I muted like the Facebook Live so that I couldn't hear the live anymore, and then now I'm not hearing myself anymore. I'm just like in our. Yes, I am. Oh, that is weird. I don't know. Because it's like Okay, guys. Echo setting. Where can I see echo setting? It doesn't say echo setting. And now I'm not hearing myself anymore. I'm just like in our. Yes, I am. Still repeating. Okay, apologies, guys. Just hang in there with us for a few moments until we figure this out. Okay. Okay, so let's begin and see how this goes. So once again, hi, welcome everybody to our Facebook Live Women's Day special with these amazing ladies. We've had a couple of technical issues. The third lady, we weren't able to find her or get her online yet,
but we're still trying. And once she joins us, it's going to be a happy bunch of four. We'll be talking about a lot of stuff, which can be, I hope it could be a mode of inspiration for you too. So I'm Priya Smith. I'm the marketing manager at Payoneer. Payoneer is an innovative cross-border payments company helping businesses all around the world to pay and get paid. We are in about 200 countries, and we have over 4 million users globally. Let's talk a little about the International Women's Day. International Women's Day is celebrated across the world today, primarily. It has been observed since the early 1900s, and since then it has grown from strength to strength every year. It is also a day to appreciate the women in our lives and to celebrate their achievements, as we are trying to do over here. It is a day of hope, reflection, and a celebration of gender parity in all walks of life. They say girls with dreams become women with vision. I'm thrilled to be hosting today's live with these three amazing women, three including me, from the online community who are a living embodiment of exactly that. So let's start off. Ladies, would you please share a little bit about yourself, what you do, how you got where you are, so that we can begin? Sarah? You're the content master. Yes. But can you hear me now? Yeah, I can. Okay, so. Okay, let's start. So guys, I'm Sarah Ahmad, and I'm CEO of Desol International. It's a software company, and we do website development, graphic designing, chatbot development, artificial intelligence, and very much more stuff. So I'm so glad to be here, invited by Payoneer, especially thanks to Priya for looking me and inviting me to be here with you all today. Uh, just going to give you a brief introduction about me. I started nearly 4 years back. My career started 4 years back when I was in my university. और उधर से मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मैंने अपना इनिशिएटिव लिया था और 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे अवार्ड दिया था MSP हीरो MSP from Pakistan. And later on, TechJuice ranked me 25 under 25 in the Young Innovator category. And after, in 2018, Government of Pakistan awarded me with Laurels of Honor Award because I was doing quite good in as being a girl in the tech industry. So this is just a brief introduction about me. And right now I'm leading a team of nearly 10 people, and we sit and work from a workplace and do all the web development stuff. So that's all about me so far. Awesome. Thank you so much, Sarah. Janet, let's hear it from you. My name is Janet Kozak, and I'm an American living here in Pakistan now for the last 5 years. And I came here actually for marriage and also to escape an abusive relationship. So that's kind of where my entrepreneurial journey began, is that I really wanted to get financial independence, and I wanted to make sure that I never really had to relive kind of that experience that I had been through. So it was great that I was able to connect with a bunch of entrepreneurs here, especially women entrepreneurs. I joined the Women X cohort, I think 4 it was, here in Karachi, just a year or so after I came to Karachi. And then I've just been growing my business from there. So my specialty is copywriting and content strategy. So I help businesses with things like their website copy, their marketing copy, and other things related to that. So that's what I do, and I've got an on and off team of myself and other freelancers that I bring on board at times. And so that's what I do, and you can find me at janetkozak.com, just my name. Pretty simple to remember if anybody wants to get in touch. Sorry about that. Okay, awesome. Thank you so much, Janet, and Sarah for sharing your introductions. Very inspirational. Most of the things, like, I have had you people on my social media for a while, but it's really a privilege and an honor to be actually sitting here with you all and, having this discussion. And we have Rushan as well. Let's try adding her to the broadcast, shall we? Hello. Yes, Sarah, sorry. Hi, Rushan. Welcome.
Okay, great. Awesome. So the Quora is complete, and I am extremely happy right now. Roshan, we were just going through the introductions. Sarah has joined us from Lahore. Janet is here from Karachi. Let's hear it from you. Would you like to share a few words about what you do, how you got where you are right now? Okay. So currently I'm incubated in NIC, National Incubation Center, Islamabad, and I have my own startup called Stipple. Basically, Stipple is a platform for the freelance designers, जहाँ पर हम लोग community building भी करते हैं और different global communities को connect करते हैं अपनी पाकिस्तानी design community के साथ. So this is all we do in short. Great to hear. Thank you so much. So, ladies, this year's theme for International Women's Day is Balance for Better. May I please hear it from you, what it means for you, and how do you portray balance in your own lives, maintaining career and family lives together? Sarah? Okay, so that's a really great question और इस क्वेश्चन का जवाब अभी तक मेरे पास completely नहीं है लेकिन still जितना मैंने अब तक अपनी कैरियर और लर्न किया है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी. So I started nearly like I told 4 years back. और तब passion ये था कि I have to learn, I have to attend different events, or I have to do something in my life. I have to get a better job, you know. So I have to get better marks. So उस वो जो लाइफ होती है उसमें तो फैमिली का इतना नहीं होता कि हमने फैमिली हैंडल करनी है. वो एक लाइफ होती है इसमें आपने सिर्फ कैरियर बनाना होता है अपने, ठीक है. So उसमें आपको अपनी फुल पोटेंशियल देनी पड़ती है. But as you move on and on, आपको देखना पड़ता है कि now you have the people around you जिनको आपने देखना है, जिनको आपने ख्याल रखना है. Plus you have to take care of your career and especially or of your own self as well. So इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है? So it's like a mature mind कि जैसे जैसे आप लोग अपने करियर में एक्सेल करते हैं तो आपके अंदर मैच्योरिटी इवॉल्व होती जाती है. और मेरे साथ ये हुआ था कि शुरू में मैं बहुत क्रेजी थी, बहुत कुछ सीख रही हूँ, डिफरेंट चीज़ों पे जा रही हूँ. फैमिली का बिल्कुल नहीं है कि मैंने कुछ घर में खाना पकाना है या कुछ इस तरह का कोई चीज़ करनी है. सो आई वाज लिटरली नॉट लाइक दैट. बट अब इस स्टेज पे जब मैं अपनी कंपनी फॉर्म कर चुकी हूँ और मेरे साथ टीम काम कर रही है, सो आई वाज स्टिल वर्किंग लॉन्ग आवर्स, 12-13 आवर्स. और कुछ अर्सा पहले मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी जो नेक थी और बैक, इट स्टार्टेड पेनिंग सो मच, or that literally affected my work as well. Like I was working, but I was living and working. Then I felt कि नहीं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं रखते हैं, so ना ही आप फैमिली को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, ना ही अपने काम में क्वालिटी या अपने काम में बेहतरी ला सकते हैं. So this is very essential कि आप लोग जब अपना काम करें तो आप देखें कि are you doing it right? Ask your own self that do you think you are on the right path, you are doing it right and timely, कि आपकी चीज़ें इतनी managed हैं कि नहीं. And if they are not, then it will affect your health and it will affect everything related to you. So this is I suggest कि आप लोग while doing your work take care of your own self and look around the people what they are expecting from you, और उसी हिसाब से अपना schedule भी करें और उसी तरह अपने आप को mold out करने की कोशिश करें. And I think that's a very important point that you just mentioned कि बाकी सब का ख्याल रखने बाकी सब चीज़ों का ख्याल रखते साथ साथ अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है. Exactly. So Janet, what do you think about it? I agree with Sarah in that I think we all have to set our own pace. You know, I think that there's a lot of pressure to compete with other people that might be in a different position than you, financially or educationally, or just with whatever responsibilities that they're trying to juggle in their lives. And so I think it's about just looking to see what you feel comfortable with, you know, in your circumstances and working within that. I mean, I'm not saying to slack off, like definitely push hard to get where you want to be and set your own goals and your own timeline, but you know, make sure that you're not comparing yourself to other people, like where they are on their journey, you know, because for example, like in my case, I have a 4-year-old daughter, so I have, you know, different responsibilities than somebody that maybe doesn't have kids, you know, so you know, I have to definitely balance like bedtime routine with work, which other people might not want to need to do, or a student might not have to do the same things that somebody who's not a student would need to do. So it's all about just setting your own goals and working through that. And I think also when it comes to balance, you know, it's about setting priorities and letting things go, you know, so, you know, outsourcing
things that you don't necessarily enjoy doing, or asking other people in your life to step up and, you know, man up if need be. If you've got a man in your life that needs to do some more work around the house, you know, like ask them to step up and make dinner or whatever, you know, like do the things that need to be done in the household, that so that you can pursue what you want to work on as well. So Agreed. And not just support for the sake of support, like something beyond just the moral support as well, right? right, Yeah. right. Like definitely get their hands dirty, and you know, everybody in your life, you know, say that you can't take on everything. You know, maybe if you have elderly parents or parents that are sick, you know, you need to make sure that you're telling your siblings, you know, I'm making my work a priority, and you know, you guys everybody has to pull their weight. Because I know a lot of families in Pakistan have like very extended family situations, so it's important to just, I think, communicate how important what you're doing is to you, so that other people can help support you in that. So I think sometimes women kind of downplay their side business that they might see it as, and don't give it top priority. So, you know, the more priority that we place on what we're doing, the more other people will have to give it the respect it deserves as well. Yeah. Agreed. Agreed. And Rashan, what would you have to say about that? How do you maintain that balance? Actually, my family is more supportive for me. What should I say? From study time to job time, मतलब जितना भी मेरा करियर रहा है, फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. इवन के लास्ट ईयर मेरा भी बैकबोन इशू था, जैसे कि सारा ने मेंशन किया, क्योंकि हम आईटी लोगों के साथ एक मसला ये होता है कि हम लोगों को हर टाइम लाइक 24 आवर्स स्क्रीन के सामने बैठे. सो ये बड़ा एक कॉमन इशू है कि हम लोग की जो बैकबोन है वो इफेक्ट हो जाती है. बट स्टिल मैं बेड रेस्ट भी थी, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. इवन अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रही, अपना स्टार्टअप है, बट स्टिल फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है. और उसमें एक चीज़ है कम्युनिकेशन. लाइक अगर मैं कोई काम इवन के घर आके भी कर रही हूँ, सो हाउ यू कम्युनिकेट विद योर सिबलिंग्स, कि अच्छा मुझे आप कोई टाइम दे दें. मतलब इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो चीज़ें आपकी डिस्टर्ब ना हो, और घर का काम घर में, बाहर का काम बाहर में. तो कोई भी चीज़ें मेरी आपस में जो है वो मिक्स नहीं होती. तो मेरी जो पर्सनल लाइफ है बिल्कुल सेपरेट है. घर आकर मैं एक डिफरेंट पर्सन होती हूँ, रूम में बंद हो गई, या बाहर फैमिली के साथ बिल्कुल एक डिफरेंट हूँ, बट बाहर बिल्कुल डिफरेंट हूँ. सो आई नो कि कैसे चीज़ों को सेपरेट रखना है, और फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ दोनों सेपरेट है. वेरी इंटरेस्टिंग. हम लोग काफ़ी चीज़ें जो हैं बैलेंस करते हुए हम बैलेंस करते हैं, और काफ़ी चीज़ें जो हैं हम अलहदगी में भी बैलेंस करते हैं. हाउ ऑसम इज दैट, राइट? So, what would you say? Okay, Shan, you said you had a lot of support from your family, but would you like to highlight or discuss any challenges that you faced and how you overcame them? Like, for example, like अगर कुछ इस तरह का कुछ मसला रहा कभी, तो आपने उसको किस तरह से जो है some like a moment in your life which was like you know कि हाँ अच्छा बहुत अच्छा हो गया, like you know I'm मसले में थी, अब like मसला हल हो गया है. जो मेरा 2017 का टाइम था वो बहुत डिप्रेस्ड रहा है, क्योंकि आई वाज इन सीवियर डिप्रेशन फॉर 7 to 8 months. और एक इशू ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली उन चीज़ों को अपने ऊपर लाइक ऑन कर लेते हैं कि अच्छा हमने ये काम करना है. लाइक अगर आप बीइंग अ वर्किंग वुमन, आप किसी ऑफिस में आप बहुत ज़्यादा काम करें, सो फर्स्ट प्रायोरिटी ये आ जाती है अच्छा हम प्रोफेशनल हैं तो हमें बाकी चीज़ों को सेपरेट रखना चाहिए. अगर कोई आपको पर्सनली तंग कर रहा है या कुछ भी इस तरह से आपको वर्क कर रहा है, सो कहा यही जाता है हमारी मैनेजमेंट की साइड से, हमें सोसाइटी भी इस चीज़ को यही बोलती है कि अच्छा नहीं ये चीज़ें साइड में प्रोफेशनल लाइफ में आपको बैलेंस सीखना चाहिए. बट सम हाउ जो है हम अपना स्टेमिना लूज़ कर जाते हैं. जितना भी आप बर्दाश्त कर लें, लेकिन वो एक हद होती है आपकी, एक ह्यूमन नेचर है कि वो एक लिमिट से ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता. सो ऑब्वियसली उसके बाद मैं डिप्रेस्ड हो गई थी उस जितना भी वो इंसिडेंट था. फैमिली अगेन मेरी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है. मतलब मैं बाहर नहीं निकलती थी, मेरी बहन वगैरह सारे को, मेरी अम्मी इवन भाई मेरा बहुत मुझसे मेरी केयर करता था. सो जब भी कोई मसला है या कुछ भी, तो फ्रेंड्स या कोई भी अगर आप किसी को सुन लें, जो कि मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी की प्रॉब्लम अगर सिर्फ सुन भी लेते हैं, बेशक आप उसका कोई सोल्यूशन ना दें, सो वो भी माइट भी पॉसिबल कि वहाँ पे अगर वो बंदा अपनी बात कर रहा है तो वो हो सकता है अपना वो स्ट्रेस सारा रिलीज़ कर रहा हो. सो वहाँ पे काफ़ी अच्छा है जो होता है कि वो कहीं ना कहीं पे नॉर्मल फील करता है. वुमन इन टेक से फ़ायज़ा यूसुफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था. आई स्पोक टू हर, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे सुना, और फर्स्ट टाइम कोई फीमेल थी जो कि मुझे सुन रही थी और मुझे नेगेटिव नहीं ले रही थी.
वो सारे जितना भी वो फेस था. So I really respect her कि जितना भी मुझे फैज़ा ने सपोर्ट किया, although कोई solution मतलब उस तरह से physically help नहीं की, but सुना उन्होंने मुझे. So अगर आपके friends या आपकी family अगर आपके साथ है तो आप इतना डाउन फेज में आप कभी भी नहीं जाओगे, आपके लिए बहुत easy हो जाता है उस फेज से बाहर निकलना. ये मेरी अपनी जो है. Thank you so much, Roshan. That was very insightful. Janet, Sarah, would you like to add to this discussion where we are, sometimes we have to, have that listening ear just go through, हमें थोड़ा सा vent कर सकें, थोड़ी सी share कर सकें ताकि अपने दिल का थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए, to be able to move forward. So, what do you say about that? I think मुझे जो challenges हुए थे, I won't say them challenge because मैंने उसको positively लिया and I never felt in my life कि there is any challenge. क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को positively देखते हैं and आप उसको इस तरह से देखते हैं कि आपने उससे कुछ learn करना है, ठीक है? So इससे कि आप अपने past को देखें, तो इस नज़र से ना देखें कि past को देख के आप दुखी हो जाएं या you go into depression. अपने past को देखें, उसमें से देखें आपने क्या गलती की थी, what words you mistake, और आप उसमें से किस तरह से अपने आप को निकाल सकते हैं या अपने फ्यूचर में उसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं. तो अभी तक मुझे जितने चैलेंज आए, आई वोंट से दैट वाज अ चैलेंज. सो अगर मैं वैसे एक बर्ड्स आई व्यू लूँ, सो द चैलेंज आई फेस वाज के सबसे पहले तो ग्रेजुएट हो जाऊंगी, जॉब क्या होगी, ठीक है? अच्छा मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, तो हाउ टू गेट क्लाइंट. अच्छा नहीं, बिफोर गेटिंग अ क्लाइंट व्हाट शुड बी द स्किल. आई डोंट हैव एनी स्किल. So it's interesting to mention कि अब मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रही हूँ, बट माई स्टार्ट वॉज फ्रॉम गिविंग वॉइस ओवर सर्विस. When in first year of my university life, I thought I know nothing. What should I do? मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ. I thought, oh, I have a voice. I can speak, right? So I thought मुझे इंग्लिश या उर्दू के वॉइस ओवर्स देने चाहिए. And actually I got that client. I got such clients as well. सो सबसे पहला तो चैलेंज मोस्टली लड़कियों को, लड़कों को, सबको फेस आता है कि कैसे आपने स्किल्स डेवलप करने. दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज. और आपको वक्त और लोगों से डिस्कशन जॉब मिल जाते हैं कि व्हाट इज द स्किल यू हैव टू डू और यू हैव टू लर्न. और उसके पास स्किल आ गया, नाउ हाउ टू फाइंड द क्लाइंट्स, हाउ टू पिच. दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. और अगेन हमारा ये सेशन ये नहीं है कि मैं सिखाऊं कि how to get clients and bring the projects, but this was the challenge that I faced. And then later when the projects came, then the challenge was how to scale out. Should I alone work or should I scale out? No, I should not work out alone. I need to hire some people. Okay, I hired people. Now, obviously people hire कर लिए, अब उनको manage करना है. You have to take care of them. So management and leadership was a challenging thing. Okay, you have to job security, you have to do everything with them. So now clients are and projects are and while ensuring the quality, you have to take care of the people working with you. So I think her stage पे challenge आया. Sometimes they blown me off के what's this, but I took this positively और उसमें से pass करके आगे move on कर दिया, ठीक है? So these are the basic challenges I think are in my life. और जो भी freelancers मेरी तरह के या जो भी इवन रोशानी की तरह के जो अपने startups रन कर रहे हैं, हर कोई इन challenges से गुजरता है, but you have to take it positively. अगर आप इन चीज़ों को learning point of view से नहीं लेंगे, positively नहीं लेंगे, optimistically नहीं लेंगे, so you will fail off. और ये नहीं है कि सिर्फ आपने पॉजिटिव रहना है, इससे कुछ नहीं होगा. यू हैव टू गो एंड मीट अदर पीपल, आस्क देम जो कि ऐसा ही काम कर रहे हैं, दैट व्हाट आर द थिंग्स यू डिड टू रिजॉल्व सच चैलेंजेस, राइट? सो जब तक आप मिलेंगे नहीं, आप स्पीक आउट नहीं करेंगे, यू वॉन्ट स्टेप आउट, सो आप किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते. सो मेरी एडवाइस सब लड़कियों को, सब लड़कों को जो भी हमें सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे इस सेशन को, इट्स दैट आप एक्सपोजर लें, लोगों से मिलें, नेटवर्किंग करें और कभी भी हेजिटेट ना करें कि ये आप स्टक हो गए. दिस इज जस्ट अ लर्निंग पॉइंट और कीप ऑन मूविंग, राइट? कीप ऑन मूविंग. यस. Agreed. Janet, what do you say? Yeah, I also agree with Sarah that it's important to reach out to the community around you. And I think that when you look at the challenges that you're going to face as a freelancer, as an entrepreneur, you're going to have like 100, 1,000 questions as you get started, and you're going to keep running into problems or different things, that little hurdles that you have to cross. And I think having
a big community that you can reach out to with questions is really important to overcoming all of those challenges. And especially, you know, other women entrepreneurs, you know, they've just been a lifesaver because they just understand like the nuances of the kind of challenges that we're going to face, you know. Like, you know, for example, having your ladies' days or something, you know, and like not wanting to go on a client call, you know, those things are going to happen, and you'll have that group of family of ladies around you that can like empathize with you and help you, you know, work through things. I would say my biggest challenges here is just navigating the culture. So for me, like, I'm not Pakistani. I wasn't raised in Pakistan, and I only came here 5 years ago. So like my biggest challenge has been, you know, coming up against like parts of culture that I just don't understand, or dealing with like infrastructure issues, things like power and internet going down, which I'm not used to, you know, and figuring out how to solve those things. And then also the finance aspect of it. So it's like, if you have international clients, you know, how are you going to get money? Because, you know, things like PayPal are blocked. So that was a big challenge. The biggest challenge I think I faced at first was just, how do I get paid? You know, and so that's why I've just been happy to be a member of Payoneer. So I'll plug Payoneer here for a minute, because they were literally like a lifesaver for me, because I had no other way to get paid. And, you know, I've been, you know, what do you call it, a client or customer of Payoneer now for like 4 or 5 years. I just got my new card, you know, my other one expired. So like, I guess I earned my badge of going through one card already. Yeah, but it's just, you know, that was definitely one of my biggest hurdles, is like, how do I get the money for the work that I did? So yeah, but, you know, alhamdulillah, we have solutions, and we have the people around us that can help us. If we don't know the solution or we can't find it, like, they can suggest those kind of things to us, whether it's tech that we need to invest in, or they can just help us through a problem, inshallah. And literally, Payoneer is a lifesaver, especially when it comes to send by request. This is literally awesome, because I keep on using these by request. By request, I'm saying. It's request invoice, you know, request a payment feature. That's really awesome. I keep on using, and I think it's a lifesaver for Pakistani especially. I'm curious, Sarah. I just wanted to ask Sarah, like, you have a team of about 10 people, I think you said. Do you pay them through Payoneer as well? Because I have paid my coworkers through the platform. They are full-time members working with me. Okay. So yeah, I'm giving them a salary on monthly basis. Okay, and then they're local, so it's easier. Yeah, it's local couriers. Yeah. Because that is you know, another good feature of Payoneer, is that you can pay freelancers as long as they are a member. Like, you can pay them all over the world. So yeah, I've found that to be very helpful as well. I've even paid freelancers that, like, I have one tech guy that I get some advice from sometimes. He's Bangladeshi, but he lives in the United States, so I can pay his Payoneer and he can help me out with stuff, which is so amazing. Okay. Yeah. By the way, there is a new tool introduced just for many freelancers working out there. It's called Time Doctor, and it gives you an opportunity to track time of, you know, like Upwork timer, and they are also linked with themselves with Payoneer as well. So if some worker has worked like 10 hours, so you can calculate the hours he has worked as an hourly rate and just invoice through the Payoneer through that portal, Time Doctor portal. So that's also an awesome thing. Yeah. Thank you so much, Sarah, for that information. And since we're on the topic, Roshan, would you like to tell us a little bit about how Payoneer has helped you? Okay, when I was in my second semester of BS, so I started blogging and freelancing on Fiverr and Upwork. So definitely Payoneer जो था उस टाइम मेरे लिए एक तो वैसे भी खुशी हो जाती है जब आप स्टूडेंट होते हो, अच्छा यार मतलब आपका जो बाहर से एक कार्ड आ गया है और अच्छा जो मेरे तो वो एक छोटी सी खुशियाँ होती हैं. बट स्टिल जो है मैं सऊदीया गई थी, वहाँ पर भी Payoneer ने मुझे Payoneer का जो कार्ड था मैंने वो यूज़ किया, क्योंकि इट्स मास्टर कार्ड था, वो कहीं भी आप एक्सेसिबल होता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सऊदीया में एक्सेसिबल नहीं है. सो डेफिनेटली Payoneer ने हर जगह पे जो है मुझे के इवन के पेमेंट देना क्लाइंट को सॉरी किसी भी फ्रीलांसर से अगर आप काम करवा रहे हैं, रिसीविंग एंड गिविंग, तो दोनों केस में जो है Payoneer काफ़ी बेनिफिशियल है. अब तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही रहेगा. Fingers crossed. हम यहाँ पे अब हैं. So, ladies, let's just discuss a little bit about, like, you know, we've talked about what you all do, and, you know, so I'd really like to hear from you. How do you, what keeps you motivated through all of this? Like, you know.
myself. Whatever. बिकॉज डेली आप इतने चैलेंजेस फेस करते हो और समटाइम्स आप जब सिंगल फाउंडर होते हो या सिंगल इस तरह से आप पूरी टीम को लेकर मैनेज कर रहे हो तो आप पूरे एक दिन में कई मोमेंट्स या कई पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर आप बहुत डाउन फील करते हो। मैं डेली घर आके सोचती हूँ अच्छा यार बस अब मैं बंद कर दूंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देन अगेन आफ्टर और जब मेरी टीम है, मुझे मेरी टीम मोटिवेट करती है जो कि मेरा विजन फॉलो कर रही है, तो जब वो मुझे कोई मैसेज कर रहा था अच्छा यार इनको भी मैंने साथ में, फिर अगेन अच्छा ओके नाउ आई एम स्ट्रांग, तो चलो फिर से। सो आपकी सराउंडिंग्स बहुत इफेक्ट करती है आपकी मोटिवेशन में। आप जिस तरह के लोगों के साथ हैं, आप जितना ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ आपका नेटवर्क है और जितना पॉजिटिव आपको वाइब्स मिलती हैं, आपकी सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती हैं। That's true. That's true. So मेरे लिए what keeps me motivated? It's a very good question. मैं एक I just think कि मैं देखती हूँ शुरू से मेरा इस तरह का कुछ विजन रहा है कि that person is on the top, how he is or what he did, like कि वो उसको ये लेवल मिला। Let's say multinational company, इंसान की है, किसी इंसान ने बनाई है, so humans can do this, so why not I? So I look at a big picture and make a big vision, or even though maybe मैं ना पहुंच सकूं उस vision तक, but I will try. Like if you think of 100, you will get 50. If you think of 50, you will get 10. So plan out a big vision and follow it, and you will somehow reach to that vision, right? So that keeps me motivated. और इसके अलावा ये कि मेरा ये कि सिर्फ मैंने अपने आप को feed नहीं करना, because as being a freelancer, a single freelancer, I was so much successful. I mean, एक जितना आपको एक जॉब में मिल जाता है उससे ज़्यादा मुझे मिल रहा था, बट स्टिल आई प्रेफर्ड कि नहीं, आई वांट टू स्केल आउट एंड आई वांट टू सर्व माय कम्युनिटी एज वेल, कि मैं अपने साथ लोगों को भी इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ, so we can make some big company and we can support each other. So this was the vision that's motivated me. और अभी भी समटाइम कुछ क्लाइंट्स आते हैं, तंग करते हैं, समटाइम्स जिन प्लेटफॉर्म्स पे हम काम कर रहे होते हैं, दे सेंड अस सम नोटिफिकेशन, आई जस्ट हैव अ जर्क, बट इट्स नॉट अ जर्क जो मुझे डीमोटिवेट कर दे, बट इट्स अ जर्क जो मुझे कहता है मेरे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, एंड देन इट मोटिवेट्स मी कि लेट्स फाइंड सम अदर वे, कि हम इससे बाहर निकल के अब व्हाट्स नेक्स्ट, राइट? सो बस ये कि फॉर एंटरप्रेन्योर्स लाइक अस जो कि अपना इधर स्टार्टअप चला रहे हैं या फ्रीलांस कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, सो नो वन इज देयर टू मोटिवेट अस, राइट? सो हम अपनी सेल्फ मोटिवेशन खुद ही हैं, ठीक है? और अगर हम अपने आप को डाउन कर देंगे और बस छोड़ देंगे, तो just think everything will be collapsed, right? So this is something, use it for your motivation, that you are your own motivation, and if you fail then no one will pick you up, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि this person let him down, but you are कि आपने खुद अपने आप को कैसे ऊपर pull करना है. So that's the thing that keeps me motivated. Very interesting. Janet? I would say my biggest motivator to having started my own business and started freelancing for myself is that I really wanted to have like that financial security and financial independence, because like I mentioned in my intro, like I lived through 10 years of an abusive marriage and a financially abusive marriage. And so when I left it, I was actually homeless for a stretch. So for about 4 or 5 months, I was homeless. So I just never want to go back to that. And I want to encourage other women to not set themselves up for that kind of failure or that kind of situation. So, my motivation is building myself up to a point where I'm financially stable and got the cash flow to be able to do the things that I want to do, in addition, and using that money to help other women empower themselves as well. So I've had the privilege over the last few years of helping a number of women through I have a domestic violence Facebook group that I help women out of abusive situations. So I hear a lot of their stories, sordid stories, but I think the common thread amongst a lot of them, a lot of the reasons that women stay is because they just don't have the money to leave, and because it does take not just family support, but it does take financial means to get out of unhealthy relationships, and especially for stay-at-home moms with no income and no savings, it's an impossible, it looks like a mountain. So I think for me, I don't ever want to get in that space, but I also want to get to a place where I can help other women not
feel so like indebted to being in an abusive relationship and having to stay in that situation. So, and in that vein, also, I think that one of my biggest motivators is showing what it's like to be an entrepreneur to my daughter, you know. And so I have a 4-year-old daughter, and I want her to see that like women can work, you know, they can be financially independent, they can be financially stable, they don't have to necessarily be married and you know, take from a relationship, like they can be giving to a relationship and they can be, you know, stable on their own. And I think it opens up a lot of opportunities and choices to women when they know that they don't have to be in a relationship. They can choose to be in a relationship. So I think that's my second biggest motivator, in addition to my own financial stability, is showing and being a good example to other women and to, you know, younger women and our daughters that, you know, there is this option to you, you know, go out there and just make your own life. Very nice. I think Yeah, financial independence is a really good thing. I totally agree to that, because I believe that would be sort of like a gateway to do so many different things that you do really want to do without, you know, feeling bound to do something that you don't really want to do. Yes, exactly. Put it in very simpler words. So, Mm. um, I want to. So, all three of you have like, you know, great professional careers so far. You're managing teams. You're managing, you know, other subcontractors. So, what helps you stay? You know, what helps you stay collected when all hell breaks loose? I think इसका तो मैंने जॉब दे दिया है कि what keeps you motivated. Yeah. So people Okay. associated with you, you have to take care of them. And Mm-hmm. again, you're your own self motivation. So Mm-hmm. if you break, then no one will pick you up. So just this is the motivation. Agreed. मगर Or किस तरह से, like again, कोई गाना सुन के कोई तसल्ली हो जाती है, like I agree, I get your point what you're talking about, like, you know, your team is the great motivating factor, like for example, just to keep your cool, what do, like count to 10 before, like, you know, taking the next step, or you know, what do you girls do? I would really like to know that. मैं सोचती हूँ कि सिर्फ मैं नहीं हूँ जो मुश्किल में है, और भी बहुत मेरे जैसे लोग हैं जो कि इसी ट्रबल से गुजरे होंगे या गुजर रहे हैं। तो इसका यही हल है कि आप रीच आउट करें कुछ लोगों को जो कि इस चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हो, उनसे बात करें। बिकॉज अगर जब आप बात नहीं करेंगे और आप उस चीज़ को शेयर नहीं करेंगे, तब तक आपका इशू नहीं हल हो सकता। और कोई भी मसला होता है तो उसको शेयर करना चाहिए। आइदर आप अपने पेरेंट्स से करें, अपने मेंटर से करें, अपने टीचर के साथ करें। शेयरिंग आई थिंक इज़ द बिगेस्ट कैथार्सिज्म, कि आप शेयर करें अपने इशू को और कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। तो दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका कोई वे राउंड ना हो, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी चीज़ों में फँसनी है और दैट इज़ गुड फॉर योर फ्यूचर, दैट्स एन अदर स्टोरी। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई वे राउंड ना हो। So discussion sharing is the key. Agreed. Like, you know, sharing your experiences and sharing, you know, the knowledge that you have, that always, like, you know, Yeah, sharing is caring, they say, for a reason. exactly. Exactly. I'd like to add on to that as well, that I think because you mentioned what do we do when you know the shit hits the fan or whatever. Sorry, probably shouldn't say that word. So basically, you freak out on the inside, but then you also have to communicate, you know. And I think that that's, like she's saying, sharing experiences, but also communicating what's going on with you. You know, like being honest with, you know, your clients or your employees or your coworkers or, you know, other people that you work with. I think that vulnerability is like really important. So even if you're having an anxiety attack because things are just going crazy, like you can share that with people, and that vulnerability like brings them in and helps people come up with solutions. So you know, with anybody that you work with, like being an open communicator, being overly communicative, I think really helps kind of you know, put the fires out. Because even if it was a problem before you tell anybody about it, as soon as you tell people, like it becomes like something that we can find solutions to. You know, if you keep it to yourself, you know, nobody's going to know how to help you. So it's always just about sharing the problem and asking for help, and just being communicative about what you can and can't do, and then going from there. Yeah. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ मैं चीज़ शेयर करूँगी। कहते हैं कि अगर आपको कभी मुश्किल नहीं आई या कभी आप फेल नहीं हुए तो आप समझें कुछ गड़बड़ है। So there is something there is something fishy, there is something fishy अगर आपका कोई फेलियर नहीं होता। So फेलियर से आप सीखते हैं, ठीक है? और ये कि जब आप कभी मुश्किल में पड़ते हैं, तब आपको चाहिए कि आप उसका कोई अल्टरनेटिव देखें।
So इसी तरह आप different paths निकालें. So if A fails, go for B and C, and if not B or C, then you should have some A way, right? So alternatives इसी तरह ही जब तक आप मुश्किल में नहीं फंसेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि what's the alternative. So I think इस चीज को भी आपको positively ही deal करना है again. So I positivity agree is the with key, right? Go ahead. Sorry. Yeah, Rushani. I was saying I agree with both Farah and Janet what they said. Team building, आपकी टीम जो है जब भी आपके पास कोई तरह के challenges आते हैं and if you discuss with them, so अकेला आपका जो mind है वो कुछ भी नहीं कर सकता. आपकी जो टीम है there is always a B plan. हर सिचुएशन के बाद हर मुश्किल के बाद there is always a B plan. So अगर यही आपके माइंड में चीज़ रहती है तो आप क्विकली जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, बजाय आप उस चीज़ को लेकर बैठ जाएं और आप बस फेलियर की तरफ जाते जाएं या डाउन. इवन फेलियर्स अच्छी चीज़ है बट स्टिल आप उसको एनालाइज करें कि क्या फेलियर था, किस वजह से, उसकी रीजंस फाइंड करें. देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड एवरी फेलियर. सो अगेन दो जाने तो Nice. सारा के साथ. Yeah, she has So we summarized. received. Very nice. Sorry. रोशाना ने summarize कर दिया हमारा. है ना? थोड़ा सा like एक wrap करके सबके लिए कर दिया present. Very nice. So we received a question for Sarah specifically, but I'd like to put it to all three of you. Where do you see yourself in the next 10 years? That's मुझे लगता है हर नया दिन एक नया एक्सपीरियंस लाता है और एक नई अपॉर्चुनिटी लाता है. मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैंने अपने सेटअप को आगे लेके जाना है. कितना आगे लेके जाना है? जितना एक इंसान आगे लेके जा सकता है, ठीक है? बिकॉज स्काई इज द लिमिट. स्काई इज द लिमिट. सो वो सिर्फ मेरे लिए ही स्काई ना हो, बल्कि जो मेरे साथ लोग हैं उनके लिए भी किसी ना किसी तरह बेनिफिशियल हो, प्लस हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो. सो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आई सी कि मुझे चाहिए फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, फ्रीडम ऑफ इनकम. सो आई डोंट केयर दैट इनकम कहाँ से लानी, कहाँ से प्रोजेक्ट्स लाने, कैसे मैनेज करना है. सो आई नीड टू हैव दैट फ्रीडम एंड आई नीड डिविजन के मैं अपना एक इतना स्ट्रॉन्ग अपनी डिसॉल इंट जो मेरी कंपनी उसका नाम इतना स्ट्रॉन्ग कर दूँ कि वी हैव आवर मार्क्स इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड. तो ये मेरा विजन है. प्लस नेक्स्ट 10 ईयर्स में मैं अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा कंफर्टेबल करूँ, प्लस अपने लिए और अपने रिलेटेड लोगों के लिए भी कुछ करूँ. आई थिंक देयर आर मेनी थिंग्स जो इंसान सोचते हैं कि ही वांट टू अचीव. But again, I don't know what's coming next. So we plan out, but who knows what Allah has decided for you and what's best for you. Absolutely. Janet? Well, for me, like at the end of the year, I kind of reached a point of burnout, to be honest, because I have been working so hard for the last 4 or 5 years to get my business and get my clients like where I wanted to be, that I had neglected like taking care of myself and taking time to myself. So I think in the future, what my business looks like and what my life looks like is a lot more like me focused in a way where I am making sure that I'm taking care of my mental health, making sure that I'm taking care of my physical health, and giving myself time to like decompress and relax and not be like on all the time. And that I think would mean scaling up my business in a way where I have more people working for me, where I can give them the work and have a system in place where the work gets done. And so that's where I want to see myself going in the next few years, inshallah. Inshallah. Roshan? I don't want to be a superstar. I want कि जो मेरे साथ मेरी टीम है या जो भी नए आने वाले बच्चे हैं वो आगे आए. So अगर आप स्टार्टअप को भी देख, सो इट्स काइंड ऑफ अ हेल्पिंग कि आप फ्रीलांसर्स को हेल्प आउट कर रहे हैं, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को आप एम्पावर कर रहे हैं. सो मेरा विजन यही है कि लाइक आई डोंट नो कि मैं आफ्टर 10 years में होंगी या नहीं होंगी, इट्स ऑल अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंड करता है. बट अगेन मेरा विजन यही है कि जो आगे आने वाले लोग हैं उनको चांसेस ज़्यादा नहीं, वो आगे आए बजाय कि मैं फ्रंट करूँ. So ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात की है जो अभी budding freelancers हैं हमारे, people who are thinking about getting into freelancing.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कि हम लोगों ने इस बारे में बातचीत की भी है कि freelancing, like, you just don't wake up one morning and you decide you want to do freelancing. We believe that there is a specific skill that you need to have to be able to get into freelancing or even think about it. So what would you say about that? What in your opinion is that one skill that somebody should have to be able to get into freelancing for that reason? डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट। आपके Interesting. प्रोजेक्ट्स आप टाइमली जो है वो अगर आप डिलीवर नहीं कर, इट डजंट मैटर इफ यू आर गुड इन इंग्लिश और नॉट। जो फॉरेनर्स हैं दे नो वी आर नॉट नेटिव, बट स्टिल अगर आप टाइमली उनको चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं और तो टाइम मैनेजमेंट डेडिकेशन से। सो ये तो सॉफ्ट स्किल्स हो गए ना, अगर टेक्निकल बात की जाए तो, बट देन दैट डिपेंड्स कि कौन सी, लाइक फॉर एग्जांपल कोडिंग में जाना है या डिजाइन में जाना है और या राइटिंग में जाना है। सो इसके लिए मैं अपने क्लासमेट्स को भी यही कहती थी और मैं इसी के ऊपर सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, ठीक है, स्टार्ट विद ट्यूटोरियल्स। आप कुछ 1-2 आर्टिकल्स पढ़ लें, आप अपना इंटरेस्ट पैदा करें। अगर डिज़ाइन में आपका इंटरेस्ट, आपको लग रहा है कि आपको डिज़ाइन को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको वो चीज़ें देखने में मज़ा आ रहा है, सो गो विद डिज़ाइन। अगर आपको कोडिंग इंटरेस्टिंग लग रही है, आप उस साइड पे चले जाएँ। अगर कोई विजन नहीं है बट रीडिंग इज मस्ट। मेरा 7 ईयर एक्सपीरियंस है यूएक्स डिज़ाइनिंग में और स्टिल जो है मैं बुक्स रीड करती हूँ, मैं डेली बेसिस पे आर्टिकल्स रीड करती हूँ। सो रीडिंग इज़ द की कि अगर आप रीड करते हो सो रीडिंग ही आपका करियर और आपकी फील्ड भी डिफाइन समहाउ कर देता है कि आपने कौन सा पाथ चूज़ करना टेक्निकल स्किल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम स्किल्स कहते हैं, कौन सा स्किल चूज़ करना चाहिए। देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है और हर बंदे को कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत है। किसी को डिज़ाइनर की ज़रूरत है, किसी को वेब डेवलपर की ज़रूरत है। तो कोई एक स्पेसिफिक स्किल नहीं है जिसकी आप कहें बहुत डिमांड है। अगर आप वेब को लें तो वेब की बहुत डिमांड है। अगर आप ग्राफिक्स में आप चाहते हैं तो आपकी उसमें बहुत डिमांड है। तो आप सिर्फ एक डोमेन को टच करें और इट्स नॉट कि आप सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतनी सब निचेज़ हैं कि आप किसी एक में भी स्किल रख लें तो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है। सो ओके, जस्ट थिंक ओके आई नीड टू डू वेब डेवलपमेंट, ठीक है, स्टार्ट इट। आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर दें। आई विल मेक HTML CSS वेबसाइट फॉर यू, आई विल मेक सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू। अच्छा, होता ये है कि दिस इज समथिंग दैट टाइम डिसाइड कि आपका कौन सा स्किल आपको आगे लेके जाएगा। तो आपको क्लाइंट आ जाता है वर्डप्रेस वेबसाइट का, तो आपको वर्डप्रेस की थोड़ी नॉलेज आ जाएगी। देन अगेन एज रोशाना सेड, रीड सम आर्टिकल्स कि वर्डप्रेस में क्या आजकल जा रहा है, व्हाट्स इज ऑल अबाउट, वर्डप्रेस में कौन सा थीम पॉपुलर है, वर्डप्रेस में कौन सा प्लगइन्स पॉपुलर हैं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि हम निच स्पेसिफिक हो रहे हैं, ठीक है। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको क्लैरिटी होगी कि व्हाट इज योर स्किल। सो आप एक बिग पिक्चर देखें एंड देन जंप इनटू इट और उसके बाद उसको आप शॉर्ट करते जाएं, शॉर्ट लिस्ट करते जाएं और अपनी एग्जैक्ट निच तक आप पहुंच जाएं, ठीक है। इट टेक्स सम ईयर्स, 2 years 3 years, नॉट मच, क्योंकि आप जितना क्लाइंट के साथ क्लाइंट हो गया, आपकी जितने आप डील करोगे, जितना स्टडी करोगे, यू विल कम टू नो कि दिस इज द स्किल दैट आई वाज लुकिंग फॉर। और इसी तरह फिर आप उन स्पेसिफिक चीज़ों की डेवलपमेंट में आ जाते हैं। जैसे अब वर्डप्रेस की मुझे जैसे काफ़ी नो हाउ हो गई है, सो आई वांट टू मेक सम प्रोडक्ट इनटू वर्डप्रेस दैट आई थिंक माय क्लाइंट कैन यूटिलाइज और नीड और कैन परचेज इट, राइट। सो दिस इज कि आप कैसे स्किल डिसाइड करोगे। जस्ट डिसाइड यू नीड टू गो इन ग्राफिक्स बिकॉज योर विजुअल concepts are too good. You are fascinated by videos, so you want to do some video animation designing. Just jump into it and then decide which software you have to use, which is demanded in market, and this is how you will decide which skill is your skill. And So that's also I would like to stick with your passion. Yeah. मैंने बहुत सारे बच्चे देखे इवन इन डिज़ाइनिंग के, अच्छा आज ग्राफिक में है तो कल को यूएक्स वाई। आप एक स्किल को पहले पकड़ें, उसके ऊपर आप जो है वो कमांड लें, देन उसके मूव टू द नेक्स्ट स्किल। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट लिया तो मैंने ब्लॉगिंग से था, बट अगेन मेरा इंटरेस्ट चेंज होता रहा और आई रियलाइज़ कि यार ग्राफिक और इन चीज़ों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब मुझे लगा कि अच्छा काफ़ी टाइम हो गया है एंड नाउ आई हैव फुल कमांड, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्किल पे गई यूआई यूएक्स पे, देन उसके बाद मैं यूएक्स पे गई।
और वो मेरी एक नीश डिफाइन थी कि मुझे रहना इसी पाथ पर है, बट मुझे हर एरिया को टच करना है। मुझे वर्डप्रेस को भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, लेकिन मुझे एक डायरेक्शन मेरी फिर भी डिफाइन थी कि ओके आई एम ए डिज़ाइनर, आई एम ए यूएक्स यूआई डिज़ाइनर, मुझे उसी पाथ पे चलना है, बट नॉलेज हर एरिया का। सो स्टिक विद योर पैशन। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं न्यू आने वाले कि वो आज लाइक मेरी अपनी टीम में भी ऐसा हुआ है कि मैंने इंटर्न हायर किए तो आज पीएचपी सीखे तो कल को आकर बोलेंगे कि अच्छा हमने तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है। सो फर्स्ट उनको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था। इवन समहाउ मैंने कुछ सीनियर रिसोर्सेज भी देखे कि 2-3 साल वो पीएचपी में काम कर रहे होते हैं, उसके बाद कहते हैं अच्छा हमें जो है वो डिज़ाइनिंग सीखनी है। सो आपको फर्स्ट ही अपना आई गेस हर पर्सन को रियलाइज़ हो जाता है कि उसने किस नीश को पकड़ना है और कहाँ पर उसने अपनी ग्रोथ करनी है अपनी फील्ड में। बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए चीज़ों में। Jennifer, would you agree to that? Yes, I agree with both Rashawn and Sarah that it's about kind of getting your foot in the door. You know, like Sarah said, jumping in, getting started with something that you're familiar with, that you enjoy, you're passionate about, and then I would say that the single most important skill is to just have that thirst to learn more. You know, so if you want to grow and improve as a freelancer, you're going to have to change with the market because nothing is going to stay the same. You know, it's going to keep evolving, it's going to keep changing. So no matter what area you're in, whether you're in like teaching drums or digital marketing or whatever, like you're going to have to roll with, you know, the changes that are happening in your industry. So definitely having that thirst and that drive to learn more and to keep improving yourself and improving all of your skills sets that you have, and picking up new skills and taking classes and learning from mentors. I think that is the most important kind of skill to have, like a passion and a thirst inside you to improve yourself. Agreed. Right. Agreed. So, what would you say, like, is your go-to tip of the trade for, that works out for you every time? If you're, thinking of doing something, or if you're stuck somewhere, what is that one thing that, that you do and it works every time? Or a couple of things. It can be a couple of things. I'm just asking about one thing. It can be a couple of things too. So in like a work environment kind of situation, like with clients, or okay. Yes. So I would say my go-to trick is just to get my foot in the door with them. So engage in conversations. Usually, like my kind of trick is to help people with something small for free, and show them what I can do. So I don't recommend working on spec for large projects, of course, because then you're just going to burn yourself out and never get paid. But if you can get your foot in the door with people, get them, get talking with them, show them a little bit of what you can do a small project for free, that builds that relationship, builds that trust, and everybody likes, people that are willing to help each other. And I think it's kind of that kind of collaborative environment where it's like we're all working towards growing our businesses together. So I work with a lot of entrepreneurs and small businesses. So that works really well for me because the type of clientele that I have, they're also like struggling in different areas of their business. They're trying to put things together and they're trying to fill the gaps in their knowledge. They're trying to pull people onto their team. So, definitely helping them out with a small project up front, like get your foot in the door. It helps you, build a relationship with those kind of businesses. And then of course, move on to paid work because you can't keep working for free forever. So draw the line pretty quickly, right after the first project in a, friendly way, but then, progress from there. That brings me to my next question, but I'd like to hear from Sarah and Rushan first. What do they say? Go-to trick is like पहले तो मैं देखती हूँ मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहे हैं आजकल, ठीक है, कौन सा थीम या कौन सा प्लगइन टॉप पे जा रहा है, सो उसकी सर्विस एक तो ऑफर करते हैं, ठीक है। प्लस आपने देखना है कि फ्यूचर डिमांड कौन से सॉफ्टवेयर की हो रही है। सो फॉर एग्जांपल आई सी क्लिक फनल्स इन टू मच डिमांड। सो उस वो लाइक ये ट्रिक है कि आपने एक ऑल्टरनेटिव रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा ये कि फॉर पीपल हु आर लाइक मी फ्रीलांसर्स, जो अगर मैं फुल टाइम टीम हायर कर रही हूँ, स्टिल आई हैव सम पीपल जो कि मेरे साथ वर्चुअली काम कर रहे हैं। सो इफ यू आर अ फ्रीलांसर एंड यू आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं व्हाइल यू डोंट हैव अ टीम, तो आपको ऑनलाइन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए और एक बैकअप रखना चाहिए। सो दिस इज़ अ गो टू ट्रिक, स्पेशली जब छुट्टियाँ आ जाती हैं, कुछ इस तरह के इशूज आते हैं एंड यू हैव टू गिव ऑफ टू योर टीम, तो कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए। इट मे बी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। और इसके अलावा
एफिलिएट मार्केटिंग इज आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ है सबके लिए। जैसे जैनेट अगर कंटेंट राइटिंग कर रही है, सो शी मस्ट नो सम सॉफ्टवेयर जो कि स्पिनर्स होते हैं, कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, so they must provide some affiliates. So affiliate marketing करें ताकि जो रेवेन्यू एबीसी रेवेन्यू वो 10 प्रोजेक्ट्स करके अर्न कर रही हैं, और तो वही अब रेवेन्यू उनको एफिलिएट्स बहुत इजीली दे सकते हैं विद विद जीरो एफर्ट लिटरली। सो इस तरह की कुछ ट्रिक्स हैं कि आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, आप किस तरह एफिशिएंटली अपनी ऑटोमेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। So affiliate is a good strategy to follow and a good trick for your business as well. और अपने clients को भी आप affiliate links दे सकते हैं. So this is something I think that's it. Okay. Rushan? Okay. So being a UX designer, I would say patience and acceptance of others' point of view. जितना आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे या अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप हमली अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके ऊपर अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, उतना ही बेहतर होता है आपके साथ, आपके लिए क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में भी। सो learning to disagree in a respectful way is the go-to trick for me. उसके अलावा जो है अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी अगर कुछ क्लाइंट को अगर आप ऑफर कर दें, फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था फाइवर पे, लाइक $10 या $15 का अगर मैं कुछ बनाकर दे रही होती थी, इवन फेसबुक कवर, तो साथ में मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी उसको दे देती थी। सो दीज आर द गो टू ट्रिक्स फॉर मी कि आप हमली पहले आप क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू इवन यूज़र है, क्योंकि मेरी फील्ड ही ऐसी है यूएक्स एक्सपीरियंस की, यूज़र एक्सपीरियंस की, जिसमें आपको जब भी आपके सिस्टम में कुछ भी आप डिज़ाइन करने जा रहे होते हो, सो आपको अपने यूज़र के जगह पर अपने आप को रखना होता है। सो यही चीज़ है, एम्पैथी जो है सेम क्लाइंट के लिए भी जो है फॉल करती है, इसीलिए Very interesting. So Janet, you mentioned like, कि ठीक है, like, you need to stop working for free. Like, when do you recognize that, you're going to put a price tag on the work that you do, on the work that you produce, and how do you evaluate how much are you going to, price it? Like, what's the price tag? How do you identify when to put a price tag and how much should it be? ये तो बहुत secret question है. Yeah. I think that's just like an overview of how people can actually do that, because I do meet a couple of people and they say कि हाँ ठीक है freeze में काम करें और पैसे नहीं मिले और ये वो बड़ा मसला होता है. So what would be your suggestion? Like, don't give away your secrets. Let's not do that. But like let everybody pay you to give them your secrets. But like if you can share one point or one pointer insight, what would it be? I think the pricing issue is something that like everyone struggles with. I'm trained as an artist. Actually, I have a BA in art, so it's something that the artists struggled with. Like, how do we price our work? And I think anyone working in any industry, they want to be competitive, but they want to make sure that they're getting paid for the work that they're doing and for the skill set that they have and their experience. So sorry, daughter. That's okay. Distracting. Okay. Would anybody else like to take over in the meanwhile? You're pricing your work, kind of like what are the industry norms? So it depends on what industry you're in. You can definitely shop around the competition, see what other people are charging, and then sample their work and see, is it similar to the quality that I'm providing? Is my quality better, worse? And that'll help you set your price point, so you can definitely kind of suss out the market and see what other people are charging. I think that's a great place to start. I volunteer with the Muslim Writers and Publishers Association as well, and we talk about pricing in there a lot as far as copywriting. And I do see people underselling themselves significantly when it comes to like the amount that they charge for, say, an article that they write, that kind of thing. And I think people deserve a living wage. So I think you have to calculate out the amount of time that goes into your work, and is that a wage that you can live on? And if it's not a wage that you can live on, I mean, definitely raise your prices. And other people are going to have to adjust accordingly. Maybe that's going to cut into the world's profits, but ultimately, like, that is like billions of dollars that people are taking home to buy yachts, whereas other people can't survive. So
I think especially in the Pakistani market, women shouldn't be afraid to ask for more than maybe other people might be charging, but then deliver superior service, so make people feel that what they're getting is worth what they're paying. So be extra communicative, be extra polite and respectful. And, as Roshan said, learn how to respectfully disagree so that they value your opinion. And I think all of those will help you price yourself significantly higher. But I've seen the Payoneer survey where women freelancers tend to get paid a little bit higher. And that's because I think that we know how to present ourselves in a way that adds value, like we're respectful and we return emails on time and, we show up and we're friendly, so those kind of things, like that customer service side, I think definitely justifies the higher rates because they're, clients are getting better customer service. You're giving more value to the client. Agreed. And that blog that you're referring to was an eye-opener for me too. I was like, what? Women are not getting paid less than men. Yeah, I was just like, but I know it. Like I see it in my circles. The women entrepreneurs that they see, they respond in full sentences to emails, whereas sometimes the men don't. Let's just be honest. Like they'll just write a one-liner, kind of like no punctuation. You're like, seriously? Okay. So those kind of things, it doesn't take that much more effort, but it makes you look so much more professional, and it helps you justify your higher rates. So, Agreed. Agreed. So Sarah, Roshan, would you like to add anything? We'll be closing in another 10 minutes just to like wrap everything up. But I'd like to hear your views on pricing it right. Yeah. मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ना लूँ, उतने लूँ जितने हम अच्छे टाइम में डिलीवर कर सकते हैं. सो इट्स नॉट के लाइक 1 वीक का टाइम और मैंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पकड़े हों. ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उतने प्रोजेक्ट्स लूँ जो हम 7 डेज में कर सकें, लेट्स से, और फिर मैं उसी हिसाब से चार्ट भी करती हूँ. ठीक है, कि टीम के ओवरहेड्स निकल आए, मेरा ओवरहेड निकला है, प्लस कुछ सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए. ठीक है, प्लस ये कि देखें, जो हम समझते हैं ना कि हमारी वर्थ इतनी है, एक्चुअली हमारी वर्थ उतनी होती नहीं, उससे ज़्यादा होती है. ठीक है, अगर आप यूएस का रेट ले लें तो वहाँ का पर पर्सन 1 आवर इज़ लाइक $100. ठीक है, फिर आवर्ली रेट, अगर आइदर वो जॉब कर रहे हैं या आइदर वो फ्रीलांसर्स हैं. सो दिस इज़ देयर रेट. तो why we offer them $5 or $10 rate, right? So अगर आप let's say एक वेबसाइट हम बना रहे हैं for like ABC amount, so tell your client that this is a price breakdown. Don't say him $1,000 for the website, let's say. Okay, just giving you a rough estimate. So you say him $1,000 for the website, and he will be like, really, $1,000 for the website? Some can easily agree, some cannot. But let's do a price breakdown. Tell him I'm doing this in this project. I'm giving you more value. So you don't have to go for any other freelancer or any other company to do this part. I'm giving a complete package, right? So when you will satisfy him in the communication, when he will see, yeah, really, she knows her stuff. So definitely he will be happy to pay you more. And it's not कि आप वो पैसा लेके आप बहुत ठीक है high rich हो गए हो. It's not that. You are also putting value in it. You are also putting time in it, and you are also putting your different team members or different freelancers or different co-workers to give the value. ठीक है, you are managing it. So they are not only hiring you, they are hiring your proper expertise and proper team. So it's justify, आप अगर उनको properly justify करेंगे, so they are वो इतने भी नहीं है कि आपको pay ना करें. So and no one asks you to work for free. It's my experience. There is no such client. Even के मैं उनको free में sometimes काम कर देती हूँ कि you are my old client. It's okay if there's some revision, but she still ask that do you want to invoice me for it, and they are happy enough to pay us for our work because they value our work. So अगर कोई ऐसा misconception है कि we can't charge more or we are giving more time but we are not getting paid, so आपको अपना सोचने का तरीका थोड़ा सा different करना पड़ेगा. That's it. Fair point. I'd like to agree with Sarah really quick on one point, which is about the itemized receipts. I think that when you're working with a new client or even an old client, like they're going to have a budget in mind of what they want to pay. And so if you've invoiced the receipt and they say, you know what, that's more than I can spend right now. And it might not have anything to do with them not valuing what you offer. It can just be outside of their budget. But that gives you the opportunity to take things out. So you can say, okay, then we're not going to do this service, and all of a sudden you're under budget and the project is a go. So I think, instead of just giving like one figure for a project, like if you break it down and show them what's in it, then it gives them
on the other side, the room to say, you know what, we can't afford all aspects of this. We just want to take a little bit out and bring it down. And then you move forward. And I think that's kind of like I guess you could call it a pro trick in a way. And I also ask my client that if you are not comfortable with the pricing, then feel free to let me know, and I will try to compensate how much I can, right? So just give them the room के वो आपकी price देख के इतना डर ही ना जाए. Let's say अगर वो नहीं afford कर सकते, so give them the room के we can talk more on the pricing. तो अपने client को इतना भी room दें आप. Yeah, it's always a negotiation with clients. So, ask for what you like, or even more than what you really think the project should be worth. And then you have that room to wiggle around and come down or ask for a discount or throw something in for free or take something out that you're not going to do. Definitely. Exactly. And I have also see that people शुरू में इन client से direct पैसों की बात करते हैं. This much for this asset. And I think it's not the right way. Deal him properly. What are your requirements? What you want? And then at the last, keep the pricing at your last priority, right? So first, tell him that you can do it, and ask him his requirement, and come up with a proper quote, rather than just shooting him with the pricing tag in the start. So this is also one strategy. But sometimes when I don't want to take projects and I don't want to say them no, then I just give a blind hit, and I can't say them no. I feel so bad when I say no to anyone. So I try to say them, please come after some days, or I will be back to you, or just say something that they say, okay, no problem. So there are some different tactics that you can learn with the passage of time. Agreed. Prashant? I agree with both Janet and Sarah what they said. Don't go for quantity, go for quality. बाकी सब चीज़ें जो सारा और जैनट दोनों ने मेंशन कर दी हैं, बट एक चीज़ जो है वो मैं ऐड करूँगी वो ये है कि मैंने जूनियर्स को, बिगनर्स को मैंने ये देखा है कि वो जैसे सारा ने मेंशन किया तो वो प्राइसिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं. सो अगर आप क्वालिटी काम उठाएं तो लाइक मैंने अपने करियर में ऐसे कि मैंने बहुत ज़्यादा फ्री काम भी किया, बट मैंने एक्सपोजर देखा है उस प्रोजेक्ट का कि अच्छा ये प्रोजेक्ट अगर मैं कर लेती हूँ, ठीक है, तो इसका एक्सपोजर क्या होगा. मैं प्राइसेस पे नहीं की, जस्ट मैं अपना प्रोफाइल और पोर्टफोलियो के ऊपर गई कि मुझे वो पहले बिल्डअप करना है. सो अभी अगर करंट पोजीशन देखें, सो आई डोंट हैव एनी अपवर्क अकाउंट बिकॉज गॉट डिसेबल. मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरा बिहांस या ड्रिबल मेरे पास आते हैं. सॉरी, You आवाज echo हो रही थी. Okay. सो जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स हैं वो बिहांस या ड्रिबल के थ्रू मुझे अप्रोच करते हैं. वो ये है कि प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डिस्प्ले हैं, तो वहाँ पे बहुत मेरा अपडेटेड या लेटेस्ट मेरा काम नहीं है, बट स्टिल जो है वो जितना भी काम है वो उस टाइम के हिसाब से क्वालिटी काम है, और मैं हमेशा क्वालिटी पर गई हूँ. अगर आपको प्राइसेस पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, अगर उस प्रोजेक्ट का एक्सपोजर हाई है, देन गो फॉर इट. आप उस प्रोजेक्ट को पिक करें और जैसे भी आपको क्लाइंट कहता है आप प्राइसेस पे नेगोशिएट करें और देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो जैसे ही आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा या पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा, प्राइसेस आपकी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती हैं, आपको क्लाइंट्स फिर हाई लेवल के मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. बट इनिशियल स्टेज पे आपको ज़रूरत होती है क्वालिटी काम की. So go for the quality, not for the quantity. That's true. Very nice. Thank you so much, ladies. It was lovely talking to you. Thank you for taking out the time to do this, especially for the Women's Day. Would just a last part. Any parting words, any words of advice for the many women that will watch this later on? Just a word, a line of inspiration for them. A line of inspiration. For youth, I have some inspiration lines for youth. अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप कॉलेज में हैं, ठीक है, अभी आपका कैरियर स्टार्ट नहीं हुआ, जॉब गोइंग कैरियर, सो आप अभी से कोशिश करना शुरू कर दें. कोई आज फ्रीलांसिंग की तरफ या कोई इंटर्नशिप्स करें, गेट सम एक्सपोजर, ताकि जिस स्टेज पे यू रियली हैव टू गो आउट, तब तक आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि आपको कोई इशू ना हो. स्पेशली दोस्त हु वांट टू फ्रीलांस, आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ से ही काम करना स्टार्ट कर दें, स्किल्स लेना स्टार्ट कर दें, बिकॉज आफ्टर जॉब, आफ्टर यूनिवर्सिटी, यू हैव दिस मच प्रेशर के यू डोंट हैव द टाइम टू एक्सपेरिमेंट ऑन योरसेल्फ. तो इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें कि उस स्टेज तक आप स्टेबल हो चुके हों.
और अगेन नेटवर्किंग करें। पाकिस्तान स्पेशली लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अल्फा टावर में इतने सेशंस होते हैं, लाइक NIC करवा रहा है, लम्स करवा रहा है, इतने सेशंस हैं। सो डोंट हेजिटेट और उधर जाएं। थोड़ा सा अपने रूम से बाहर निकलना पड़ता है, थोड़ा तैयार होना पड़ता है, इट्स ओके, एक चेंज होना चाहिए। तो उधर जाएं, लोगों से मिलें और देखें क्या कर रहे हैं और स्किल्स लेने की कोशिश करें। एंड दिस इज़ अ स्टेज जिसमें यू हैव टू हार्ड वर्क, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर बाद में मुश्किल होती है। Janet? Yeah, so yes. Well, one of my favorite quotes is "A rising tide lifts all boats," and I think that I live by that when you go out into the community and you help the people around you. So if you participate in Yeah. Facebook groups, if you are hanging out on forums, if you're answering questions on Quora, like not only are you helping other people, but you're also like it boosts your standing as well. Like it helps you look like an expert in your field, and it does help you like kind of raise your status as somebody who's knowledgeable, and you get a chance to get in front of people that you wouldn't necessarily get in front of before. For example, getting on Facebook Lives with Priya here today. You know, it's like being out there in the community and interacting. It really like exposes you to opportunities that you wouldn't ordinarily have. So don't be afraid to get out there and network and help other people and give back into the community. You know, and eventually it will come back to you. You know, believe in karma and all that stuff. Like it will come around, and you'll get the boost when you need it at the point when you need it the most. So Yes. Beautiful. True. Beautiful. Roshan? We focus on your skill set. Freelancing is good. जब आप स्टडी कर रहे हो तो पार्ट टाइम आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं फॉर द 1 year, क्योंकि आप जब तक जॉब नहीं करेंगे आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं डेवलप होगा. और नेक्स्ट थिंग, if you have some problem with your system, then set your own example. So आप खुद से वो इनिशिएट लेना सीखें कि ठीक है आप कंपेन करना तो जानते हैं, हम फीमेल्स भी लाइक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, although it's a women's day, but still I would say कि हम फीमेल्स जो है फर्स्ट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते. सो पहले हमें खुद को एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखना होगा कि हमने एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करना है. देन हम बाहर की जो मार्केट है वहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा कोई और हमें रिस्पेक्ट दे. सो फर्स्ट हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखें, और सेकेंडली अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, सेट योर ऑन एग्जाम्पल. आप बी योर बॉस, आप अपना कोई काम स्टार्ट करें और आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए, या अगर आप whatever you want to do, लेकिन सेट करें अपनी खुद की कोई एग्जाम्पल के, ताकि दूसरे लोग उससे इंस्पायर हों. रोशन, वैसे योर पॉइंट इज गुड कि फीमेल्स को किसी को सपोर्ट करना चाहिए. अच्छा, इंटरेस्टिंगली मेरी मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं, स्पेशली एजेंसीज हैं जो क्लाइंट्स रन कर रही हैं, वो वुमेन हैं. और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, और दे वांट मी टू ग्रो एज वेल व्हाइल दे आर ग्रोइंग. बट आई ऑब्जर्व दैट पाकिस्तान में थोड़ी सी लाइक पुलिंग है. While there are many good women, you said Faiza Yusuf has mentored you and she's awesome, like awesome lady. But while I have noticed there is a lot of like pulling, I think इसको हमें, I don't know how we can control it. किस तरह से हम बताएं कि no, that's really necessary. Like Priya, some lady referred me to you, right? So there's also so much power, so much good people. I agree. But still, I there's agree. a lot of leg pulling as well that I think should be. I don't know how we can overcome that challenge. I think that would be a discussion for another day. But right now, Yeah. talking on women's spirit, and you know, right now over here, all of us, we've been referred by women to be sitting here together and you know having this discussion. And once again, thank you all for attending. People who have been watching, I don't know how bored you got, but I had a ball of a time. And thank you all for sharing your insights. And a happy Women's Day. Thank you for having all us. the beautiful women out there. Shine on, not just today, but every day. Thank you so much, Priya, for inviting us all. It was a great Thank you, guys. session. Thank you. Thank you, Priya. I'll be in touch with every one of you again soon. For sure. Bye-bye. For sure. Okay, bye. Bye. Bye.